Alright guys, welcome to the session and I hope all of you guys are doing good. So let's get started with today's class. So today we are going to talk about two concepts. In fact, three concepts we'll try to cover, right? One is your variance, which we started in the last class briefly. Then we'll talk about standard deviation. And the third one, which we are going to talk about is MAD, right? Mean absolute deviation. So let's start with the variance here. So let's generate one small data so that we'll understand with the example. Okay. So these are the two classes where I have the marks. Now, what is the interest? We need to find out the variance. Now, first of all, we'll understand the formula for the variance. So here you can see that we have seen two formulas, and as of now, I will be focusing on this formula. And after that, we'll work and discuss on this formula. Let's first start with this one. So formula for variance says that summation of I is equal to 1 to n xi minus mu x whole square upon n, right? Xi minus mu x whole square upon n. Now, what is xi means? Xi means nothing but individual data points, right? It's xi means it will be x1, x2, x3, x4, and so on up till xn. Because if you see this formula, summation of I is equal to 1 to n, right? Xi. I is ranging from 1 to n. So in this particular example, this is my x1, this is my x2, this is my x3, this is my x4, and this is my x5. Same way here as well. This is my x1, this is my x2, this is my x3, this is my x4, this is my x5. So here I have xi is nothing but 1, 2, 3, 4, and 5. Because there are 5 records. Now once that is done, what formula says? Summation of I is equal to 1 to n xi minus mu x whole square upon n. Mu x is nothing but average. We had a detailed discussion about the average in the last class. Average for this data set looks like 30. We'll quickly do the calculation with the formula. So average of this data is 30 and average for this data is 36. Okay. So now I have all the values which I need for calculation. I have xi, which is your x1, x2, x3, x4, and x5. And formula says that x1 minus mu x whole square. Let me expand this formula. Summation of I is equal to 1 to n
xi minus mu x whole square upon n. Now, my n is, in our example, 5, because there are 5 records, right? So my n is nothing but 5. That means if I expand this formula, it is gonna be x1 minus mu x whole square, x2 minus mu x whole square, x3 minus mu x whole square, x4 minus mu x whole square, x5 minus mu x whole square upon n. Right? If you open this formula, it is gonna be this. Now we have x1, yes, 10. Do we have mu x? Yes, 30. So let's start putting on the values. So my x1 is 10, this value. Mu x is 30. So 30. Square of that plus x2. x2 is the second value. So 20 minus x, mu x is again average this thing, average is the same. So 30. x3 is 30. So 30 minus 30 whole square. Then x4 is 40. 40 minus 30 whole square. And x5 is 50. 50 minus 30 whole square. Upon n. N is nothing but total number of records. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Right. Now let's solve this. 10 minus 30 is what? 20. 20 square is 400. So 400 plus 10 square, that is 100, plus 0 square, that is 0, plus this is again 10 square, that is 100, plus again 20 square, that is 400, upon 5. So 400 plus 400 is 500. 500 plus 500 is 1000. 1000 by 5 is 200. So that is my variance. As of now, I help you understand about how the variance calculation happens. Right? I did not discuss about what variance denotes. But how variance calculation happens, are you guys clear, all of you? Okay. Now let's try to understand this in English. What variance means. Now, if you see this formula, what you are trying to do. This is my data points, right? This is 10 is one data point, 20 is one data point, 30 is one data point, 40 is one data point, and 50 is also one data point. And what are you doing is you are subtracting each of the data point with the mean, right? That is what you are doing, subtracting each of the data point with the mean. So 10 minus 30, 10 minus the mean, 20 minus 30, 20 minus the mean, 30 minus 30, 30 minus the mean, 40 minus 30, 40 minus the mean, and same way 50 minus 30, 50 minus the mean, right? So basically this is what? Distance from the mean, right? If I say that this guy is present here and mean is present here, what is the distance of this guy? What is the distance of this guy from the mean, right? Same way, there is a guy which is present 20 and 30 is the mean. So what is the distance between the point and the mean? So basically this number is what? This number is nothing but distance from the mean, right?
x1 कितना दूर है एवरेज से, x2 कितना दूर है एवरेज से, x3 कितना दूर है एवरेज से, एंड सो ऑन सो फोर्थ. So if I go to this equation back again, what I am trying to do here is I am calculating the distance of all the points from the mean, right? We are calculating the distance of all the points from the mean. And that distance is my squared distance, right? That distance is my square distance. I'm taking the square of the distance. Plus, I am dividing with n also, total number of records. And when we are dividing with n means I am taking the average. If you remember the formula for average, summation of I is equal to 1 to n xi by n. When we do divide by n, that means it's an average. So can I say that at the numerator, you have the distance square, at the numerator, you have the distance square, and in the denominator, you are having the total number of records. So I can very well say it is a average distance square because we are dividing it with n. So it's an average distance square. So basically what is variance? Variance is nothing but it's an average distance square of all the points from the mean, right? Average distance square of all the points from the mean. Average distance square. Why we are saying average? Because we are dividing with n also. So it's an average distance square from the mean. So what is variance? Variance is nothing but it's an average distance square from the mean. Or I can say average square distance from the mean, right? It's one and the same thing. But what benefit I am getting from this? Now, we discussed two things. One is how to calculate the variance. Second is what is the definition of variance. First is how to calculate the variance. This is the entire calculation which we discussed. Second is what is the meaning of this? The meaning of this is it's an average distance square of all the points from the mean. But what information it is giving me? The information it is giving me is what? So let's take two distribution, right? Here, let's say my minimum value is 10 and maximum value is 50. And let's say average is 30. And we have 20 also present and 40 also present. These are my points. 10 is the lowest value, 50 is the highest value, 20, 30, 40 is present in between, and in that 30 is a mean. Now what are you doing? You are subtracting this 30 with 10, taking the square, subtracting the 20 with 30, taking the square, subtracting 30 with 40, taking the square, and same way subtracting 30 with 50 as well and taking the square. So you are doing, and plus also one more thing, you are subtracting 30 with 30 as well. You are subtracting 30 with 30 as well, right? Because 30 is a data point plus 30 is a mean also, right? 30 is a data point and 30 is the mean also. So now once we are doing this, we are getting this variance number. Now just imagine this is my distribution. Let's create another distribution, right? This is my first distribution where we had 30 as an average.
40 as a one point. 30 is also 1 point as well, right? Let's make the average in red color. So 30 is one data point as well. 30 is one data point as well, and 30 is mean as well, right? 30 is a data point as well, 30 is mean as well. So this 30 is my data point, and this 30 is my mean. Now we have another data point as well, which is your 50. Same way we have another data point as well, which is your 20. And same way we have another data point as well, which is 10. Okay. And then I told you that we are subtracting this mean with all the points and taking the square of it, and whatever distance I got, I am dividing it by n. Let's take another distribution. Now another distribution, let's say my distribution is something like this, right? My another distribution is something like this. Let's say this is my mean. Let's say my mean is 30 only. Let's take mean, and one of the data point is also 30. One of the data point is also 30. So this is my data. And your lowest point here is, so there are again 1, 2, 3, 4, 5. 5 points are there here also. Let's take 5 points. 1 point is your 15. 1 point is your 5. Here also 1 point is your 45. 1 point is your 60. Let's assume. Now here we are again going to do the same task. What are we going to do? We are going to subtract this 30 with all the data points. And I will take the square distance, and then I will divide by n, average square distance. But here what you will notice is that automatically you are subtracting 30, the mean, with a wide range of numbers, right? Here you can see that the distance between the mean and 60 is 30. 60 minus 30. But here what was happening? 30 minus 50, that is 20. The farthest point was 20 distance. In this side also, the farthest point was 20 distance. Maximum distance is 20. But here, what is the maximum distance? The maximum distance is 30. And in this side, the maximum distance is 25. Right? 30 minus 5. So here, from the mean, the lowest point is very far as compared to this guy. From the mean, the highest point is very far as compared to this point. Now, if the distance is more, in that case, the subtraction which you will have, 5 minus 30 square plus 15 minus 30 square plus 30 minus 30 square plus 45 minus 30 square plus 60 minus 30 square upon 5. But here what is happening? This number is 25 square plus 15 square plus 0 square plus 15 square plus 30 square upon 5. Right? But in this case, what was the number? 30 minus 10 is 20 square plus 30 minus 20 is 10 square plus 30 minus 30 is 0 square plus 30 minus 40 is 10 square plus 30 minus 50 is 20 square upon 5. So clear cut in the numerator, I have more bigger numbers here. Here I had 20, here I had 25. So यहाँ पे 5 ज्यादा है. यहाँ 10 है तो यहाँ 15 है. यहाँ पे भी 5 ज्यादा है. This is 0, this is 0, that's okay. This is 10, this is 15, ये फिर से ज्यादा है. 20 and 30, ये भी फिर से ज्यादा है. So automatically here my numerator will be bigger. Here my numerator will be smaller, right, as compared to this guy. And as my numerator is bigger, you are trying to divide number 5 with that numerator. Automatically this entire fraction will be bigger.
as compared to this one. Here my numerator is smaller. When I divide it by 5, the number which I am going to get will be a smaller number as compared to this number. And why it is happening like this? Because the spread here is more. And as the spread here is more, automatically my variance is coming out to be bigger, because this number is what? This number is variance. So as from the mean, the data points are more spread out, ज्यादा दूर दूर है, तो उसकी वजह से मेरा वेरिएंस बढ़ रहा है. बट यहाँ पर मेरे जो पॉइंट्स हैं बहुत पास पास में है, तो उसकी वजह से मेरा न्यूमरेटर थोड़ा कम है और ऑटोमेटिकली मेरा वेरिएंस भी इसके कंपैरिजन में कम है. Is that making sense, all of you? What variance is and how it gets calculated and what information you are getting from here, right? Now think of any example. तुमने एग्जाम दिया, तुम्हारे मार्क्स आए. तुमने सेल्स किया, तुम्हारा सेल्स आया. तुमने प्रॉफिट किया, तुम्हारा प्रॉफिट आया, राइट? तुमने क्रिकेट में रन्स स्कोर किए, तुम्हारे रन्स आए. तो हर का कुछ अलग अलग स्कोर होगा. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से देयर आर 10-11 बैट्समैन, दे ऑल स्कोर्ड सम रन्स, राइट? किसी ने 10 बनाया, किसी ने 20 बनाया, किसी ने 20 बनाया, किसी ने 30 बनाया, किसी ने 35 बनाया, किसी ने 40 बनाया, 45 बनाया, 45 बनाया, 60 बनाया. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 बनाया एंड 70 बनाया. ये मेरा पहला टीम का स्कोर है, टीम 1. मेरा टीम 2, 10, 50, 70, 70, 90, 140, 170, 190. 1 2 3 4 5 6 7 8, बीच में थोड़ा एक नंबर डाल देते हैं. 100, 80, 150. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. किसका वेरिएंस ज्यादा होगा, क्या लगता है? टीम 1 का, टीम 2 का? टीम 2 का, राइट? बिकॉज यहां पर अगर एवरेज तुम निकालो कुछ भी, अराउंड 80 कुछ होगा, तो एवरेज से तुम बहुत दूर हो. जो तुम्हारा स्मॉलर स्कोर है बहुत दूर है, और तुम्हारा हायर स्कोर भी बहुत दूर है. जबकि यहां पर तुम अगर एवरेज लेट्स से 40 मान के चलते हैं हम लोग, लेट्स अज्यूम इट्स 40, तो एवरेज नियर बाय ही है. लाइक एवरेज से मेरे छोटे पॉइंट और बड़े पॉइंट ऑलमोस्ट नियर बाय ही है, लाइक एज कंपेयर टू दिस गाय. तो इसमें मेरा स्क्वायर डिस्टेंस बढ़ जाएगा, इसमें मेरा स्क्वायर डिस्टेंस कम हो जाएगा, और उसका मैं एवरेज जब लूंगा तो वो कम हो जाएगा, इसका एवरेज जब लूंगा वो थोड़ा बड़ा होगा, राइट? सो दैट इज व्हाट वेरिएंस डज. सो वेरिएंस इज बेसिकली हेल्पिंग मी अंडरस्टैंड अबाउट द स्प्रेड ऑफ द डेटा. मेरे डेटा का स्प्रेड कैसा है. नाउ लेट्स गो बैक टू वन मोर एग्जाम्पल. सपोज ये मेरा मार्क्स वाला एग्जाम्पल है, इसको मार्क्स की जगह हम लोग कर लेते हैं एज, राइट? लेट्स मेक दिस एज एज. Okay. Now let's go back to the formula which we discussed. What is the formula? Formula is summation of I is equal to 1 to n xi minus mu x whole square upon n. xi का यूनिट क्या है? Years, because it's an age. Mu x का यूनिट क्या है? Average will also be years only, right? Because it's an age. So when I say 10 years minus 30 years, square of that. So what outcome I will be getting? What is the unit of this particular number? It will be 200 year square, right? Because तुम years को square कर रहे हो, you are doing a square of it. So this is year square by 5. Like तुमने सारा कैलकुलेशन किया फिर by 5 किया. तो basically what I wanted to tell you here is that इसका जो यूनिट होगा, if let's say I am taking the standard, I am taking the variance of the age, इसका जो यूनिट होगा, the unit will be year square. So whenever we are calculating the variance, the unit of the variance is coming out to be
year square if again it's an age. If it is a rupees, it will be rupees square. If it's a dollars, it will be dollar square. If it's a height, let's say meters, so it's a meter square and so on. So basically the unit of the variance will always be squared, right? Always be in a square format. So now if, again, there is a catch here. If let's say someone asks me that what is the variance of this data set? I will say the variance is 200 year square, right? So this is again not what we want to tell. Year square means what? Why not I will make it in year, right? Why not I will make this particular value in year? You are saying year square, that is okay, no problem. But why not can I make this as year square to year? And that is only possible when I do the square root, right? Square root of 200, whatever number is, the outcome will be that year, right? So square root of 100 will be, I think, 114 something, I guess. SQRT 14.14. So basically, now my unit will be what? Because I did the square root of 200 year square, I did the square root of 200 year square, where 200 year square is basically nothing but variance, right? 200 year square is basically nothing but variance. But what are you doing is you are taking the square root of the same. And the square root of variance is known as what? Square root of variance is known as standard deviation, right? Standard deviation. So basically there are two terms. One is variance. We normally denote variance as sigma square. That is summation of I is equal to 1 to n xi minus mu x whole square upon n. That is the variance. Second concept is standard deviation, which we denote with sigma. Square root of sigma square is sigma. सिग्मा स्क्वायर का स्क्वायर रूट सिग्मा हो जाएगा, राइट? इसका फॉर्मूला क्या है? जो भी तुम्हारा वेरिएंस था, समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 टू n xi minus mu x whole square upon n, right? So this number which you are seeing is nothing but square root of this guy, and that is nothing but your standard deviation. Why we are doing this? Because here, as we discussed, the unit of this number will be in squares. Year squares, rupee squares, dollar squares, meter squares, liter squares, whatever. But when I do the square root of that, the outcome which I will be getting is in the same unit the way your data is in. Suppose your data is in years. People ages are in years, right? So I want my standard deviation to also be, or I want the measure of spread to also be in the years. And which measure of spread will give me the value in years? The answer is standard deviation. Variance will give me the outcome in the year square. So when we are doing the square root of the same, then that is nothing but your standard deviation. Here I got my variance as 200. I took a square root. So my standard deviation is coming out to be 14.14. Same way in this data set also, whatever your variance would be, when you do the square root of the same, in that case, what will happen? In that case, it is going to be standard deviation, right? Are you guys understanding this, all of you? Till this point? No. So now once this is done, let's further proceed, right? So we got this understanding. So let's go ahead.
So we, till this point of time, we discussed about this formula. But interestingly, I can see one more formula. Now, why there are two formulas for variance? Same way, there are two formulas for standard deviation as well. So the question arises is that why there are two formulas for variance and why there are two formulas for standard deviation. To explain that further, let me go to one slide. Just give me a second. Yeah, let me go to this slide. Right. When we are dealing with data, I'll ask one practical question to you, right? One logical question to you. Suppose let's say you are working in a retail domain, right? Suppose you are तुम डीमार्ट पे काम करते हो. Let's say तुम्हारा तुम मैनेजर हो डीमार्ट के, right? ना तुमको जानना है about your customer. Let's say you want to know the standard deviation of age of your customer, right? Or you want to know the standard deviation of the salary of your customers, something like that. Whatever information you are storing. Now my question to you guys is, at current, see, again, you are getting a lot of customers. Every day you are getting a lot of customers. So those customers information you are storing somewhere. Let's say you are storing that customer's information in Excel file where you have all the customer details, right? जितने भी कस्टमर तुम्हारे पास आए हुए हैं पिछले जितने भी साल से तुम बिजनेस कर रहे हो, तुमने सब कुछ एक डेटाबेस में स्टोर कर रखा है, और आई कैन से दैट तुमने ये स्टोर कर रखा है एक्सेल में, राइट? नाउ माय क्वेश्चन टू यू गाइस इज, the information which you have in Excel of all of your customer, will I consider it as a population or will I consider it as a sample? मतलब क्या, कि जो तुम्हारे सारे कस्टमर है, क्या मैं वो मान के चलूंगा कि मेरे सारे के सारे कस्टमर हैं, या मैं मान के चलूंगा कि वो मेरे सिर्फ थोड़े बहुत कस्टमर हैं? व्हाट डू यू थिंक? सारे लाइक बेसिकली पॉपुलेशन इज नथिंग बट मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरे वो कस्टमर सारे कस्टमर्स हैं, दे आर ऑल माई कस्टमर्स, और कैन आई say that those are like one set of customers for me? What do you think? Will it be a population or will it be a sample? सारे कस्टमर है जितने भी तुम्हारे पास आए हुए हैं अभी तक, सारे कस्टमर्स हैं, राइट? टिल दिस पॉइंट, जब से तुम्हारा स्टोर खुला है, जितने भी कस्टमर्स तुम्हारे पास आए हैं सबका इंफॉर्मेशन मेरे पास है. सो विल दैट बी अ सैंपल और विल दैट बी अ पॉपुलेशन? द आंसर इज इट विल बी अ सैंपल, राइट? नाउ व्हाई आई एम सेइंग इट्स अ सैंपल? द रीजन इज, जितने भी मेरे पास कस्टमर आए हुए हैं इन माय रिटेल स्टोर, क्या उन कस्टमर्स के अलावा मेरे पास और कोई कस्टमर्स नहीं आएंगे? या फिर जो भी मेरे पास कस्टमर्स आए हुए हैं, क्या वो कस्टमर हमेशा मेरे पास ही आएंगे? सो फॉर बोथ द आंसर इज नो, राइट? क्या मेरे पास कोई नए कस्टमर्स नहीं आएंगे? आंसर इज नो, यू विल गेट न्यू कस्टमर्स. क्या मेरे एग्जिस्टिंग कस्टमर मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे? You know the answer. No, there can be a chance that they will leave, right? That means whatever data you are dealing with in a real time, it will never be a population, right? चाहे तुम अपनी कंपनी में ले लो, कंपनी में सारे एम्प्लॉयज हैं, क्या वो मेरे पॉपुलेशन है, सैंपल है? इट्स अ सैंपल, बिकॉज आज मेरी कंपनी में 10 लोग हैं, कल को हो सकता है कुछ लोग छोड़ के चले जाएं, कुछ नए लोग आ जाएं, राइट? सो इट्स नॉट फिक्स्ड, दैट्स व्हाई इट्स अ सैंपल. So always when we are analyzing the data, we assume that we are
playing with sample. Population is never with us, right? I cannot get population because I cannot say that this is what we have. There will not be any future addition, there will not be any future subtraction. ऐसा नहीं होता है. यहाँ तक are you guys clear, all of you? Why I am saying it's a sample? Okay. अब एक एग्जांपल लेते हैं. जैसा इलेक्शंस होते हैं तो वी गेट द इंफॉर्मेशन कौन सी पार्टी जीतेगी, राइट? सो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जिट पोल्स. तो उसमें क्या होता है, उसमें हम लोग सारे इंडियंस के पास जाके पूछते हैं कि कांग्रेस जीतेगी या बीजेपी जीतेगी. आई कैन नॉट गो टू एवरी इंडियंस, राइट? अगर मैं सबके पास चला गया पूछने तो मेरा तो बहुत टाइम वेस्ट होगा. इट विल बी अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस एंड एट द सेम टाइम इट्स अ कॉस्ट एज वेल. मुझे हर जगह जाना है, पूरे इंडिया में घूमना है, सबसे बात करनी है, इट्स अ कॉस्ट. एंड एट द सेम टाइम इट विल बी अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. दैट मीन्स व्हाट, कि जब तक मेरा सर्वे खत्म होगा तब तक तो अगला इलेक्शन आ जाएगा, राइट? बाय द टाइम आई विल कंप्लीट माय सर्वे, द नेक्स्ट इलेक्शन विल गोना हैपन बिकॉज इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. सो नाउ in place of working with the what do you say, in place of working with the population, we prefer to work with the sample. Now here you can see, right, this is my entire India ka thing, India ka population, and what we are doing is we are taking samples. These are the samples. Okay, so that is the difference between population and sample. In statistics, a population is the entire group of people, items, or data that you are interested in studying. Think of it like this: population is equal to everyone or everything you care about in your study. What is a sample? A sample is just a small part of that population which you actually collect data from. Sample is a small group chosen from the population. Why? Because it's usually too expensive, time consuming, or impossible to ask everyone in a population. So instead, you choose a smaller group, a sample, to study that and use it to make guesses about whole population. Right? That is the idea. Now, why I'm discussing this? Because there is a problem with the variance formula. Right? इस स्लाइड में इतना ही पढ़ना है अपने को, बाकी हम लोग बाद में देखेंगे. ये थोड़ा अगर एग्जाम्पल देखना देख लो. फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट इन अ कॉलेज, पॉपुलेशन ऑल 10,000 स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज. अगेन लॉजिकली देखा जाए तो ये पॉपुलेशन भी नहीं है, ये तो सैंपल ही है ना, क्योंकि 10,000 लोग हैं. कल को नए बच्चे आएंगे, पुराने बच्चे जाएंगे. बट अभी के लिए हम लोग मान के चलते हैं इट्स अ क्लोज्ड ग्रुप. क्लोज्ड ग्रुप मतलब कि ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि 10,000 बच्चे ही हैं और नहीं आने वाले और नहीं जाने वाले. दैट इज नोन एज क्लोज्ड ग्रुप. हमने क्लोज ग्रुप करके रखा हुआ है. तो आई एम सेइंग 10,000 इज अ पॉपुलेशन, सो 200 आई एम टेकिंग. सो आउट ऑफ दैट 10,000, 200 मैंने बच्चे ले लिए फॉर सम सर्वे. सेम वे पेशेंट, सारे पेशेंट जो कि हॉस्पिटल में आए मेरे पूरे साल के, आई एम अज्यूमिंग इट्स अ क्लोज्ड ग्रुप. नो वन विल लीव, नो वन विल कम, राइट? सो दैट्स अ क्लोज्ड ग्रुप. सो उसमें से मैंने 100 पेशेंट्स ले लिए फॉर एनालाइजिंग द डेटा. So that assumption we make when we are analyzing any data, we assume that, okay, this is a closed group. Let's assume it's a population. Now play around with the samples. But actually अगर मैं logically सोचूं तो वो भी एक sample ही है जो हम population decide कर. Because future में changes होने वाले हैं उसमें. It's not a fixed set of people out there, right? जो हमने अभी discuss किया. So now let's go back and let's come to your variance वाला slide. Now this is my variance formula for population का formula, right? You can see it's a population variance.
एंड दिस इज अ सैंपल वेरिएंस। तो सैंपल वेरिएंस के अंदर तुमको फॉर्मूला चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या चेंज है इसमें? इसमें सिर्फ एक छोटा सा चेंज है। जो तुम्हारा डिनोमिनेटर है वो n था, यहां पर वो n-1 हो गया है, राइट? बाकी कोई चेंज नहीं है, एवरीथिंग इज सेम। xi है, यहां पे xi है। म्यू एक्स है, यहां पे x बार है। म्यू एक्स क्या होता है? पॉपुलेशन मीन। और ये x बार क्या होता है? सैंपल मीन। ओके, तो मीन ही है ये। सेम वे n क्या है? टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन के काउंट, पॉपुलेशन काउंट। ये स्मॉल n क्या है? सैंपल का काउंट। काउंट ही है ये भी, राइट? इट्स काउंट ओनली। बट तुम क्या कर रहे हो? तुम सैंपल काउंट के अंदर एक माइनस कर रहे हो। तुम पॉपुलेशन के काउंट के अंदर एक माइनस क्यों नहीं कर रहे हो? Why are you subtracting one in the sample, but why are you not subtracting one from the population? Population count में you are not subtracting with one, but in the sample count you are subtracting with one. So why are you doing that? Right? That is what we have to discuss. Why we are having the different formula, one for population, one for sample. Same goes for standard deviation as well, right? The concept will remain the same. जो तुम्हारा फॉर्मूला यहाँ पे था, यहाँ पे n-1 हो गया, राइट? एग्जैक्टली द सेम, कोई फर्क नहीं, राइट? बिकॉज वी ऑलरेडी नो वेरिएंस का स्क्वायर रूट है स्टैंडर्ड डेविएशन। जो स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ प्रॉब्लम्स हैं वो सेम वेरिएंस के साथ प्रॉब्लम होंगी, और वाइस वर्सा, राइट? तो जो तुम वेरिएंस में चेंज करोगे ऑटोमेटिकली इट विल चेंज इन द स्टैंडर्ड डेविएशन एज वेल। बट नाउ क्वेश्चन अराइजेस इज दैट व्हाई दिस चेंज यू डिड, राइट? व्हाई यू डिड दिस चेंज, व्हाई यू आर नॉट गोइंग विद। तुम तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 टू n एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन n। यहाँ पे ये -1 तुमने क्यों डाल दिया? व्हाई यू आर पुटिंग दिस -1 इन द फॉर्मूला? क्योंकि अगर मैं पॉपुलेशन का फॉर्मूला देखूंगा -1 नहीं है, जबकि सैंपल के फॉर्मूला में है, तो इसको हटा दो। क्यों नहीं हटा रहे हो तुम? व्हाई यू पुट दिस एक्स्ट्रा -1 आउट देयर, राइट? सो दैट इज व्हाट विल अंडरस्टैंड नाउ। पहले लॉजिक समझते हैं, राइट? उसके बाद एक सैंपल सिमुलेशन करते हैं। यहां पर तुम n से डिवाइड कर रहे हो, यहां पर तुम n-1 से डिवाइड कर रहे हो। तो अगर तुम इसमें n-1 से डिवाइड कर रहे हो, सो कैन आई से दैट तुम्हारा जो डिनोमिनेटर है वो थोड़ा सा छोटा हो रहा है बिकॉज ऑफ -1? ऑल ऑफ यू, कैन आई से दैट? बिकॉज आई एम सब्ट्रैक्टिंग माई डिनोमिनेटर विथ -1, तो मेरा डिनोमिनेटर थोड़ा छोटा हो गया। एंड इफ माई डिनोमिनेटर इज बिट स्मॉलर, कैन आई से दैट ये जो पूरा का पूरा फ्रैक्शन है थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा? बिकॉज तुम एक छोटे नंबर को डिवाइड करवा रहे हो एक नंबर से, राइट? सो ऑटोमेटिकली मेरा फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। ओके, मतलब कि तुम इसको थोड़ा हाई कर रहे हो। यू आर ट्राइंग टू, इसका टर्म होता है ओवर एस्टिमेट। यू आर ट्राइंग टू ओवर एस्टिमेट, राइट? अब ऐसा क्यों कर रहे हो, इसका मैं तुम्हें सिमुलेशन दिखाता हूं। बेसिकली तुमने डिनोमिनेटर में से एक नंबर माइनस कर, नॉर्मल मैथ्स देखो जिसको नहीं समझ में आ रहा है, राइट? 10/5 दैट इज 2। बट मैं बोल रहा हूं नहीं, मुझे 10/5 नहीं करना है, मुझे 10/5-1 करना है, दैट इज 10/4 करना है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा। तो इसका जो वैल्यू आ रहा था 2, ये तो थोड़ा सा बड़ा आ गया। तो वही यहां पर भी हो रहा है। अगर तुम n का फॉर्मूला लेके चलते तो तुम्हारा सैंपल वेरिएंस थोड़ा सा छोटा होता। बट जब तुमने n-1 कर दिया, थोड़ा तुम्हारा सैंपल वेरिएंस थोड़ा सा बढ़ गया, राइट? Are you guys understanding this? Those guys who did not understand, now is that making sense? When I am taking this number in the denominator, my fraction is increasing, right? But why are we doing it? So let's try to understand. So I'll take one this thing, Excel file. I have that already ready.
So this is my data set. Now, to understand this simulation, first of all, I will set some rules, right? The first rule is that already I told you that I will never have the population, right? मुझे मेरे population के बारे में कभी कभी पता नहीं चलेगा, because population is a big number, and अगर मुझे population के बारे में जानना है तो मुझे सबके पास जाके बात करनी पड़ेगी. So in a real time you will not get the population. But यहाँ पर मैं एक assumption लेके चल रहा हूँ. What assumption I am taking? I am taking assumption is that this data which I have, यहाँ पर 1200 records हैं. If you see all the records, there are 1200 records. मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो डेटा है तुम्हारा, ये पॉपुलेशन डेटा है, राइट? ये मेरा assumption है. Let's assume that it's a population data. मतलब कि मेरे पास सारा डेटा है. All 1200 records is my population. It's like a closed environment, right? So it's a closed data. ना इसमें कुछ ऐड होगा ना कुछ जाएगा. तो दिस इज माई पॉपुलेशन. अब मैंने क्या किया, इस पॉपुलेशन का जो मेरे 1200 रिकॉर्ड्स थे उसका मैंने निकाल लिया वेरिएंस. और इसमें तुम देखोगे मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है. मैंने फॉर्मूला यूज किया है var.p. यहां पर एक्सेल में दो फॉर्मूलाज होते हैं. एक होता है var.p और दूसरा होता है var.s. p इज फॉर पॉपुलेशन, s इज फॉर दिस थिंग, सैंपल. ओके. So what I am doing here is I am using the var.p formula because what I told, this is a population. Now मेरा population variance कितना है? 139.63, right? My population variance is 139.63. Now I will keep this number aside. इस नंबर को थोड़ा भी साइड में रखते हैं. अब मैं क्या बोल रहा हूं कि मैं इसी 1200 डेटा से, what I am saying here is that from this 1200 records I am going to take multiple samples. ये देखो मैंने यहाँ पे मल्टीपल सैंपल्स लिया है. सैंपल 1 लिया है, सैंपल 2 लिया है, सैंपल 3 लिया है, सैंपल 4 लिया है, सैंपल 5 लिया है. ऐसे करके मैंने टोटल आई थिंक 25 सैंपल्स लिए. मैंने 25 सैंपल्स लिए. ठीक है. हर सैंपल में कितने रिकॉर्ड्स हैं, एक बार इसको छोटा करके देखते हैं. हर सैंपल में कितने रिकॉर्ड्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 रिकॉर्ड्स हैं, राइट? हर सैंपल के अंदर आई हैव 16 रिकॉर्ड्स. अब इस डेटा का मैंने वेरिएंस निकाला, सैंपल वेरिएंस. बट मैंने क्या किया, मैंने दोनों फॉर्मूला यूज किए. ये जो हमने दो फॉर्मूला देखे हैं, एक पॉपुलेशन वेरिएंस का फॉर्मूला देखा है और एक सैंपल वेरिएंस का फॉर्मूला देखा है, राइट? तो मैंने क्या किया, मैंने दोनों ही फॉर्मूला यूज किया. तो यहां तुम देखोगे ये पॉपुलेशन वेरिएंस वाला फॉर्मूला यूज करके मैंने इस डेटा का वेरिएंस निकाला. पॉपुलेशन वेरिएंस का फॉर्मूला यूज करके मैंने इस वाले डेटा का वेरिएंस निकाला. सेम वे इस वाले डेटा का वेरिएंस निकाला, एंड सो ऑन सो फोर्थ. तो यहां तुम देखो मैं var.p यूज कर रहा हूं. तो ये जो ऊपर वाली लाइन है ये मैंने क्या करी है, मैंने var.p दैट मींस डिवाइडेड बाय n वाला फॉर्मूला यूज किया और मुझे यहां पे सब वेरिएंस मिल गए. सेम वे अगर तुम नीचे वाला देखोगे तो मैंने सैंपल वेरिएंस का फॉर्मूला यूज किया है, var.s. और सैंपल वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था? n-1. और जैसे ही मैंने n-1 फॉर्मूला यूज किया, तुम यहां पर देखो ये जो तुम्हारा जो पॉपुलेशन वेरिएंस था वो 157.6 था, बट जो मेरा सैंपल वेरिएंस है 168 हो गया. ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज तुमने डिनोमिनेटर में एक माइनस कर दिया. और जब तुमने तुमने डिनोमिनेटर में एक माइनस किया, ऑटोमेटिकली जो मेरा फ्रैक्शन था वो बढ़ गया, राइट? माय फ्रैक्शन गॉट इंक्रीज्ड. और वो तुम हर सिनारियो में देखोगे, यहाँ पे भी देखो, 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 हर जगह 25 के 25 सैंपल्स में यही होने वाला है, बिकॉज वी नो द फॉर्मूला, राइट? बट ऐसा किया क्यों? तुम तो पॉपुलेशन वेरिएंस का फॉर्मूला ले सकते थे. मैंने पॉपुलेशन वेरिएंस का फॉर्मूला भी ले रखा है, ज्यादा फर्क तो दिख नहीं रहा है. ये 157 है, ये 168 है, ये 110 है, 118 है. ज्यादा फर्क तो नहीं है. तो तुमने ऐसा किया क्यों? ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हमारा इंटेंशन क्या है, व्हाट इज माई इंटेंशन?
मेरा इंटेंशन ये है, अभी के लिए मैंने ये अज्यूम कर रखा है कि ये मेरा पॉपुलेशन है। अभी के लिए मैंने ये अज्यूम कर रखा है कि मेरा मेरा पॉपुलेशन है, बट रियल में पॉपुलेशन नहीं मिलता है हमको, राइट? इन रियल वी आर नॉट गोइंग टू गेट द पॉपुलेशन। तो अगर रियल में पॉपुलेशन नहीं मिलेगा, तो क्या मैं ये पॉपुलेशन वेरिएंस निकाल पाऊंगा, ऑल ऑफ यू? क्या मुझे पॉपुलेशन वेरिएंस मिल पाएगा? नो, राइट? पॉपुलेशन वेरिएंस कब मिलेगा? जब तुम्हारे पास पूरा पॉपुलेशन होगा। अब तुम्हारे पास पॉपुलेशन ही नहीं है, तो पॉपुलेशन वेरिएंस कहां से आएगा? वो तो हमने यहाँ पे एक अजम्पशन ले लिया था कि ये डेटा मेरा पॉपुलेशन है, इसलिए मैंने पॉपुलेशन वेरिएंस निकाल दिया। बट रियल टाइम ऐसा नहीं होता है। इन रियल टाइम व्हाट वी डू इज वी हैव टू टेक सैंपल्स, और उस सैंपल का जो वेरिएंस आया है उसको मैं बोलूंगा कि वो पॉपुलेशन का वेरिएंस है। हम लोग उसको बोलते हैं एस्टिमेट कर रहे हैं, राइट? इट्स अ पार्ट ऑफ इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। मैं इन्फर कर रहा हूं। मतलब क्या? कि मेरा जो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है वो मैं नहीं जानता हूं, बट मैं जब सैंपल उठा रहा हूं उसका जो वेरिएंस आ रहा है, वो वेरिएंस जो आएगा, मैं ऐसा अज्यूम करूंगा कि जो मेरा पॉपुलेशन का वेरिएंस होगा वो इसका जो वेरिएंस आया है उसके आसपास होगा। इतना समझ में आया ऑल ऑफ यू? आर यू गाइस गेटिंग इट व्हाट आई मेंशन जस्ट नाउ? आई विल रिपीट दिस सेंटेंस। In the real time scenario, we don't get the population. And if I will not get the population, I will not get the population variance or population standard deviation. And if I don't have the population variance and population standard deviation, then what we do is, because as I don't know the population, I take samples. And from the samples, what variance or standard deviation I get, I assume that the population variance or population standard deviation will also be on the same lines, right? मुझे पॉपुलेशन, मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं बिकॉज यू विल अंडरस्टैंड कि हमने ऐसा क्यों किया, राइट? आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन। इन द रियल टाइम सिनेरियो मुझे पॉपुलेशन का डिटेल्स नहीं मिलता है, और पॉपुलेशन के डिटेल्स नहीं मिलने की वजह से मुझे पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस निकालना नहीं आ सकता है, बिकॉज वो डेटा ही नहीं है मेरे पास। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सैंपल्स उठाते हैं और सैंपल का जो वेरिएंस निकालते हैं, और जो सैंपल का वेरिएंस आता है हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि जो सैंपल का वेरिएंस आया है वही वेरिएंस मेरा पॉपुलेशन का होगा या उसके आसपास होगा, राइट? ये हम लोग अज्यूम करके चलते हैं। दैट इज नोन एज इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। मैं सैंपल से पॉपुलेशन को इन्फर कर रहा हूं। मुझे पॉपुलेशन का आइडिया ही नहीं है, बट मैं सैंपल से पॉपुलेशन को इन्फर करने का ट्राई कर रहा हूं कि हाँ पॉपुलेशन में ऐसा हो सकता है, राइट? इट्स ऑल गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज एंड assumptions, राइट? तो ये कहानी है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि चलो ठीक है, अच्छी बात है, बट तुम इसमें भी सैंपल का वेरिएंस का फॉर्मूला चेंज क्यों कर रहे हो? अब उसका हम लोग आंसर आंसर रिवील करने वाले हैं। अभी तुम मुझे बताओ कि हमने अजम्पशन किया कि डेटा मेरा पॉपुलेशन है, तो मेरा पॉपुलेशन का वेरिएंस कितना है? रफली 139.63, राइट? जबकि असली में ये नंबर मेरे पास होगा ही नहीं, बिकॉज आई डोंट नो द पॉपुलेशन। बट ये तुम्हें सिमुलेट करने के लिए, तुमको समझाने के लिए मैंने अज्यूम किया है कि ये मेरा पॉपुलेशन है और ये मेरा पॉपुलेशन का वेरिएंस है, राइट? तो अब तुम ये सोचो कि अगर मैं 139.63 मेरा पॉपुलेशन का वेरिएंस है, यहां पर मैंने सैंपल का वेरिएंस निकाला, राइट? मैंने 25 सैंपल्स निकाले, सबका अलग अलग वेरिएंस है, राइट? सबका अलग अलग वेरिएंस है। अगर मैं पॉपुलेशन के वेरिएंस जो आए हैं यहां पे, ऑल दीज नंबर्स, इन सबका एवरेज निकाल लूं, और सेम वे इनके भी सबका एवरेज निकाल लूं, तो क्या होगा? जाके देखते हैं। बिकॉज ये इतने थोड़े बड़े, कोई कोई वेरिएंस मेरे बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं, कोई कोई वेरिएंस मेरे बहुत छोटे छोटे आ रहे हैं, राइट? बिकॉज ये सैंपल है। तुमने यहाँ पे छोटा डेटा लिया होगा जहां पे तुम्हारा गैप कम होगा, यहाँ पे तुमने थोड़ा बड़ा डेटा लिया होगा जहां पे तुम्हारा गैप ज्यादा होगा। वेरिएंस इज व्हाट? गैप ऑफ अ डेटा, राइट? स्प्रेड ऑफ अ डेटा।
यहाँ पे स्प्रेड ज्यादा है, यहाँ पे स्प्रेड कम है, क्योंकि तुमने यहाँ पे कम स्प्रेड वाले डेटा उठा लिए, बिकॉज इट्स रैंडम सैंपल, तो तुमने कम स्प्रेड वाले उठा लिए। बट जब मैं 25 सैंपल का सबका वेरिएंस उठा के इसका एवरेज करता हूं, एवरेज क्या आ रहा है? जब तुम पॉपुलेशन वेरिएंस वाला फॉर्मूला यूज करते हो, तुम्हारा वेरिएंस आ रहा है 127। बट जब तुम सैंपल वाला वेरिएंस का फॉर्मूला यूज करते हो, तुम्हारा वेरिएंस कितना आ रहा है? 136। तो तुम्हारा सैंपल वाले फॉर्मूला से जो वेरिएंस आ रहा है, दैट इज 136, एंड पॉपुलेशन वाले से आ रहा है 127। तो 127 और 136 कौन सा मेरा पॉपुलेशन वेरिएंस के पास है? दैट इज 136, सैंपल वाला, राइट। और मेरा एम क्या था? मेरा एम ये था कि मुझे पॉपुलेशन का वेरिएंस तो पता नहीं होगा, मुझे सैंपल के वेरिएंस से मुझे एज्यूम करना पड़ेगा कि जो सैंपल का वेरिएंस आया है, मेरे पॉपुलेशन का वेरिएंस भी उसके आसपास होगा। तो क्या वो थ्योरी यहां पे फिट बैठ रही है कि सैंपल का जो वेरिएंस है वो पॉपुलेशन के वेरिएंस के आसपास है, जबकि जो पॉपुलेशन का वेरिएंस है जो तुमने यहां पर लगाया था, वो थोड़ा सा दूर है? कैन आई से दैट, ऑल ऑफ यू? यस। तो कैन आई से दैट जब तुम पॉपुलेशन वेरिएंस का फॉर्मूला लगाते हो अपने सैंपल के अंदर, तो वो थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट करता है, राइट? तुम्हारा वैल्यू को थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर रहा है। तो उस अंडर एस्टिमेट को बचाने के लिए स्टैटिस्टिशियंस ने क्या किया? उन लोगों ने बोला अच्छा एक काम करते हैं, n-1 लगा दो नीचे, ताकि जो है अंडर एस्टिमेट हो रहा है वो थोड़ा बराबर हो जाए, थोड़ा इसके पास आ जाए। तो देखो पास आ गया। अब तुम ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि n-1 ही क्यों, n-2 क्यों नहीं किया? स्टैटिस्टिशियन ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और उन्होंने ये पाया कि जब मैं n-1 डिवाइड करवाता हूं, तो जो मेरा वेरिएंस आता है वो ऑलमोस्ट सेम आता है या उसके आसपास आता है। अगर मैं n से डिवाइड कराता हूं तो थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट होके आता है, और जब मैं n-2 से डिवाइड करके आता हूं तब मेरा वो ओवर एस्टिमेट हो जाता है, राइट। मतलब अगर मैं n-2 वाला फॉर्मूला लगाता तो मेरा ये वैल्यू शायद 140 कुछ होता या 145 कुछ होता, जो कि मेरे पॉपुलेशन वेरिएंस से थोड़ा ज्यादा है। मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे कम चाहिए, बट इतना कम भी नहीं चाहिए, आसपास वाला चाहिए। So statisticians did lot of experiments and they found out that when you divide it by n-1 using the sample formula on the sample data, the variance which I get is almost near to the population variance. That's why they use this new formula which is n-1. Is that understanding making sense, all of you? Is that discussion making sense? Right? तो दैट इज द रीजन यहां पे तुमने n-1 देख लिया, दैट इज द रीजन तुमने स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर भी n-1 देख लिया। ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग जया? ओके, व्हाई आई आस्क जया, बिकॉज शी इज अ स्कूल गोइंग गर्ल। अगर उसको समझ में आ रहा है तो तुम लोगों को आ जाएगा, राइट? दैट्स व्हाई आई ऑलवेज आस्क हर। ऑलराइट, सो दिस इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन। नाउ ये जो करेक्शन करा, राइट, इसका एक नाम है, द नेम इज बेजल्स करेक्शन। ओके, when you calculate the mean from a sample, it's an estimate, not the true mean of a population। जो हम लोग सैंपल से मीन निकाल रहे हैं, सैंपल से स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हैं, सैंपल से जो भी निकाल रहे हैं, वो एक एस्टिमेटेड वैल्यू है, वो रियल वैल्यू नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन के बारे में मुझे पता ही नहीं है, राइट। दिस कॉजेज द वेरिएबिलिटी, दिस कॉजेज द स्प्रेड टू बी अंडर एस्टिमेटेड, because you are measuring how far points are from the sample mean,
विच इटसेल्फ इज नॉट ट्रू सेंटर, राइट। अब ये क्या बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है, पीपीटी पे वापस चलते हैं, कहाँ चली गई, ये बोलना चाह रहा है, यहां पर जो तुम्हारा मीन था एट द टाइम ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस के फॉर्मूला पे, वो था पॉपुलेशन का मीन। बट यहां पर जो तुम्हारा मीन था, ये पॉपुलेशन का मीन नहीं है, ये किसका मीन है, ये सैंपल का मीन है, राइट। और सैंपल का मीन तो ऑब्वियसली मेरे पॉपुलेशन की मीन से थोड़ा अलग होगा, और तुम सैंपल के मीन से अपना कैलकुलेशन कर रहे हो, तुम सैंपल के मीन से अपना पॉपुलेशन का वेरिएंस निकालने का ट्राई कर रहे हो, राइट। तो वहां पे गड़बड़ी है, तो वही यहां पे बोलना चाह रहे हैं, when you calculate the mean of a sample, it's an estimate, not the true mean of a population. This causes the variability spread to be underestimated because you are measuring how far points are from the sample mean, which itself not the true center. मीन क्या है, सेंटर वैल्यू है। तो तुम ये बोल रहे हो कि जो तुम अपना सेंटर से निकालने का ट्राई कर रहे हो डिस्टेंस, स्क्वायर डिस्टेंस, वेरिएंस क्या होता है, स्क्वायर डिस्टेंस एवरेज होता है। अब तुम्हारा मीन ही गलत होगा अगर, तो तुम्हारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा वो भी गलत ही होगा। तो उस अंडर एस्टिमेटेड वैल्यू को टेक करने के लिए इसने क्या बोला, डिवाइडिंग बाय n-1 इंस्टेड ऑफ n स्लाइटली इंक्रीजेस द रिजल्ट, कंपेंसेटिंग फॉर द अंडर एस्टिमेशन। वही हमने डिस्कस किया था हमारे एक्सेल के अंदर। हम लोग n-1 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारा जो वेरिएंस आ रहा है यूजिंग द सैंपल वो कितना आ रहा है, 136 आ रहा है, और वो मेरा पॉपुलेशन के वेरिएंस के पास है। ऐसा क्यों है, बिकॉज मैं n-1 से डिवाइड कर रहा हूं, जो कि मेरा वैल्यू जो अंडर एस्टिमेटेड था, किसकी वजह से, तुम अपना पूरा कैलकुलेशन सैंपल मीन पे कर रहे हो, पॉपुलेशन मीन पे नहीं कर रहे हो। और सैंपल मीन कैन बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द पॉपुलेशन मीन, क्योंकि सैंपल तुम्हारे अलग अलग होते हैं। तो जो तुम्हारा सैंपल मीन होगा वो काफी अलग होगा। यहां पर एग्जांपल देख लो, इस पूरे के पूरे डेटा का मीन निकालते हैं, ये पूरे के पूरे 1200 रिकॉर्ड्स का मीन निकालते हैं। तो कितना मीन है, 30.5, और यहां पर कितना ले रहे हो तुम, 27 ले रहे हो। एक बार चेक कर लेते हैं, एवरेज, राइट, 27 ले रहे हो, सही है नंबर, 35 ले रहे हो, 29 ले रहे हो। एक्चुअल में तुम्हारा 30 है, बट व्हाट यू आर टेकिंग सम डिफरेंट नंबर्स, राइट। और उसके चक्कर में तुम्हारी जो यहाँ पे स्प्रेड आ रही है, वेरिएंस आ रही है, वो इस मीन की बेसिस पे आ रही है, और इस मीन की बेसिस पे आएगी ये जो स्प्रेड, तो तुम्हारी ओवरऑल स्प्रेड से तो काफी अलग होगी, और काफी लोअर साइड पे होगी, राइट। व्हेन वी आर गोइंग विद दिस फॉर्मूला, वी हैव सीन दैट द वेरिएंस कमिंग वेरी लो। सो टू टेक केयर ऑफ दैट, व्हाट आर वी डूइंग इज वी आर डिवाइडिंग विद n-1, ताकि जो मेरा वेरिएंस आएगा वो पॉपुलेशन वेरिएंस के काफी पास होगा, राइट। दैट इज द होल स्टोरी, हमने दोनों तरीके से समझा। एक तो अगर मैं पॉपुलेशन वेरिएंस का फॉर्मूला यूज करता हूं तो अंडर एस्टिमेटेड वैल्यू आती है, और मैं सैंपल का यूज करता हूं तो ऑलमोस्ट एक्यूरेट वैल्यू आती है। अंडर एस्टिमेट क्यों आती है, बिकॉज तुम्हारा पॉपुलेशन मीन को लेके तुम कैलकुलेशन नहीं कर रहे हो, तुम सैंपल के मीन को लेके कैलकुलेशन कर रहे हो, और देयर कैन बी ए वेरी हायर चांसेस दैट जो तुम्हारा सैंपल का मीन होगा वो पॉपुलेशन की मीन से काफी अलग हो सकता है, राइट। और उस चक्कर में जो तुम्हारा आउटकम आता है वो थोड़ा सा अंडर एस्टिमेटेड आता है, जो कि हमने एग्जाम्पल पे भी देखा, 125 कुछ आ रहा था। तो उसको टेक केयर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिनोमिनेटर में -1 ऐड कर देते हैं, ताकि जो मेरा डिनोमिनेटर थोड़ा कम हो जाए, और ऑटोमेटिकली मेरा जो फ्रैक्शन है थोड़ा बढ़ जाए। वो अंडर एस्टिमेट वाले चीज को थोड़ा टेक केयर कर लेता है, राइट। दैट इज द होल स्टोरी। So dividing by n-1 instead of n slightly increase the result, compensating for that underestimation. It makes the sample standard deviation an unbiased estimator of the true population standard deviation. मतलब कि जो मेरा सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन आया है उसको मैं बड़े आराम से बोल सकता हूं कि मेरा पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन भी उसी के आसपास होगा।
right? So this small change which we are doing in the formula for standard deviation of sample and the variance of a sample, it is nothing but known as Bessel's correction. Are you guys getting this, all of you now? I hope this gave you the nice understanding. So this majority of the people are not aware of this, right? So what we are discussing. If you ask someone in industry also, they may not able to answer. All right. So now this, if you see this plot, here you can see that when the standard deviation was 0.5, मेरा जो red chart है काफी पतला सा है. When the standard deviation was 1, थोड़ा सा वो broad हो गया है. When the standard deviation is 2, थोड़ा और broad हो गया है. And when the standard deviation is 3, वो थोड़ा और broad हो गया है, right? When the standard deviation is increasing, that means your spread is more, because standard deviation or variance is nothing but measure of spread, right? So obviously वो ऐसा होगा, right? बढ़ेगा. So that is the understanding. So here is the summary table. We discussed about range, interquartile range, variance, standard deviation. In this PPT, I only explained these 4 measures, but मैं एक और measure अभी touch करूंगा, which is mean absolute deviation. But अभी ये 4 समझते हैं एक बार quickly. So we have 4 measures: range, interquartile range, variance, and standard deviation. What it tells you? So range tells you the difference between the largest and the smallest. It is best for quick overview, right? It's not giving me more insight. It will give me a quick idea that, okay, the spread is more, because range is more, spread is more. Interquartile range, spread of the middle 50% of values, ignoring outliers, right? Ignoring outliers and all we did not discuss, so you can skip that for now. We'll discuss that later on. Average squared distance from the mean, right? That already we discussed. That is variance. It is used for statistical analysis. Standard deviation is the average distance from the mean. It's not square distance now, because we took the square root of it. That's why it is average distance from the mean. And that is used for general understanding of spread, right? Normally, we are using standard deviation only quite extensively because it is falling in the same unit, right? Variance is coming in the year square, rupees square, all those things which we have discussed. But standard deviation is not coming in the square unit, right? Standard deviation coming in the normal unit. Okay. So that is the idea. Now what I will be doing is I'll take one more measure, which is measure of spread is MAD, mean absolute deviation. So let's try to understand this. Let's say I have a class 1 marks. Let's say 10, 25, 30, 45, and 50. And I have the class 2 marks. 5, 10, 15, 20, 30, right? This is my class 2 marks. Now I want to calculate the next measure of spread. It's also a measure of spread only, which is known as mean absolute deviation. Mean absolute deviation. It is also known as MAD, right? Now, what is the formula for the mean absolute deviation? The formula for the mean absolute deviation is nothing but summation of I is equal to 1 to n xi minus mu x upon n, right? This is the formula for your mean absolute deviation. Xi minus mu x upon n, average, right? Mean is nothing but because of this guy.
एब्सोल्यूट डेविएशन इज नथिंग बट बिकॉज द डेविएशन फ्रॉम द मीन, राइट? ये मेरा पॉपुलेशन मीन है, ये मेरा नॉर्मल मीन है। ये n क्या है? ये इस पूरे के पूरे वैल्यू का मीन है, दैट इज दिस मीन, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। ये मीन का नाम कहां से आया? इसके नाम से आया, क्योंकि तुम n से डिवाइड कर रहे हो, राइट? जहां हम लोग n से डिवाइड करते हैं इट्स लाइक एवरेज। तो फॉर्मूला क्या बोलता है? फॉर्मूला बोलता है एक्स आई माइनस म्यू एक्स अपॉन n, राइट? दैट इज द फॉर्मूला, एंड अगेन ऑब्वियसली समेशन। तो लगाते हैं फॉर्मूला यहाँ पे। पहले तो मुझे एवरेज निकालना पड़ेगा। लेट्स कैलकुलेट द एवरेज। एंड सेम वे लेट्स कैलकुलेट द एवरेज एज वेल। ओके, नाउ xi minus mu x, this is my xi minus mu x, xi minus mu x, xi minus mu x, xi minus mu x, xi minus mu x. Same way here also xi minus mu x and so on. So I will be subtracting. But when I am subtracting, I also want the absolute value. Absolute value means what? 10 minus 32 is minus 22. But I don't want negative sign. So it will become plus 22, right? So absolute value of this minus this, I am going to get 22. I am not getting minus 22 because we took the absolute value. That's why this absolute coming in, right? Deviation is nothing but away from the mean. How much this point is away from the mean, that is deviation. But that deviation I want absolute. And once I get all the absolute deviations, I want to calculate the average, right? So that is what I will do for this guy also. ABS of this minus this. Same way ABS of this minus this. Same way ABS of this minus this. And same way ABS of this minus this. So I got the absolute value, absolute deviation, right? I got the absolute deviation, absolute deviation, absolute deviation, absolute deviation, and absolute deviation. And I want to sum up. It's a summation of, right? So I want to sum it up. I want to sum it up. That is coming out to be 62. And then I want to divide with n. 1, 2, 3, 4, 5. So 62 divided by 5. So that is coming out to be 12.4. So 12.4 is my MAD for this particular data set. Okay. And here if you see this data set is very much spread out. Minimum value 10 है, maximum value 15 है, 50 है, 50 minus 10 is 40. But if you see here, 30 minus 5 is 25. So here the spread is not that much. And if the spread is not that much here, automatically I am expecting that my MAD will also be less. I am expecting that my MAD will also be less. Let's go and check it out. Absolute value of this minus this. Absolute value of this minus this. Absolute value of this minus this. Because you can see all the points are so nearby, this difference is coming very small, right? क्योंकि मीन से तुम लोग बहुत पास पास हो, तो ऑटोमेटिकली नंबर भी कम, बहुत छोटे छोटे आ रहे हैं, राइट? और वो नंबर छोटे आएंगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा न्यूमरेटर छोटा हो जाएगा, और न्यूमरेटर छोटा हो जाएगा तो तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा जो पूरा नंबर है वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये मेरे सारे वैल्यू हैं। लेट्स सम इट अप, एंड दैट इज 36। टोटल वैल्यू तो 5 ही है, सो दिस डिवाइडेड बाय 5। What is my mean absolute deviation?
My mean absolute deviation is 7.2. Here the mean absolute deviation is coming out to be 12.4. Here the mean absolute deviation is coming out to be 7.2. So here it is more, that means the spread is more. Here it is less, that means the spread is less. So that is again one more way of calculating the mean absolute deviation. Normally we are not using this quite extensively, right? We are normally using standard deviation quite extensively, and sometimes your this thing, what do you say, IQR, right? Variance is again square root of standard deviation, so you can use interchangeably, right? You can use interchangeably because it's just a square of standard deviation is variance, right? So that is fine. So when I'm saying people are using standard deviation more, that means that variance also coming by default, because variance क्या है, square root ही है, square ही है standard deviation का, right? Are you guys clear with this, all of you? No. So now what we will doing is I'll show you some code in Python, right? Again, we are going to learn Python. Is mad square is variance. Mad square is not variance, right? Wait a minute. Mad square is variance. Yes, mad square is variance. Correct. Because यहाँ पर हम लोग इस absolute value ले रहे हैं. It's one and the same thing only, right? यहाँ पे square ले लो तो तुम्हारा variance हो जाएगा. That's fine. You are correct. Generally, if we have to calculate the variance or standard deviation, we have to use sample variance formula, right? Not the, yes. Normally, we are preferring to use the sample variance formula. All right. So now what we'll be doing is we'll take one data set and we'll quickly check it out how this looks like, right? Actually, in Python, you will get all these numbers automatically, right? You don't have to do all these calculations. Abhi to for understanding point of view, I have explained how to calculate all those things. But in real time, you don't have to worry about those. Python does that for you. We will be learning Python, right, in future. But as of now, just I'll show you. Okay. So this is my data set which I will be using. That is your tips.csv. So let me open this. So I'm taking a small data only so that you will understand it. Small as in less number of columns. There are 244 rows we have in this data.
And here you can see we have only two numbers. This is again, you can take it if you want to, but these are the two main numbers, right? There's nothing but number of customers. But if you see, there are three numerical data. This is my numerical data, this is my numerical data, and this is my numerical data. So mean, median, mode, standard deviation, variance, all those things is only applicable for numerical data only, right? I cannot get the average of male, female. I cannot get average of smokers. I cannot get the average of days. I cannot get the average of time, right? I can only get the average of total bill, tip, and size, right? So let's load this data, which is present in my desktop. I'm writing this code as of now. Don't worry about that, what I'm doing it, right? That we are going to discuss in detail. As of now, we will be just focusing on the this thing, numbers which we discussed. Okay, so don't worry about this. So here you can see that we have the tips data coming in. Whatever present in that tips.csv file, I read that data in Python. Don't worry about the code, as I mentioned. We'll have a detailed understanding once we'll learn Python. Now what I will do, I want to find the mean of my data. In this, I have three numerical columns: total bill, your tip, and your size, right? So what I want is, I want the average of total bill, I want the average of tip, I want the average of size, I want the standard deviation, I want the median, I want all these numbers basically, right? So now I will be running only one simple command, that is tips dot describe. And now when I see this, you can see you are getting all the numbers. And now you are aware of all these numbers as well. Count is nothing but कितने records हैं. Mean is nothing but your average. Standard deviation हमने just पढ़ा, right? Minimum value, maximum value. Maximum minus minimum is your range. 50th percentile हमें पता है median होता है. 75th percentile minus 25th percentile क्या होता है? IQR, perfect. तो मुझे IQR भी मिल रहा है, राइट? अगर तुमको याद होगा, हमारे पास 7 रिकॉर्ड्स थे, हमने मीडियन निकाला था, फिर ऊपर वाले से हमने ऊपर का मीडियन निकाला था, नीचे वाले से नीचे का मीडियन निकाला था. तो ये 25th परसेंटाइल था, ऑल्सो नोन एज Q1. ये 75th परसेंटाइल था, ऑल्सो नोन एज Q3. सो Q3 माइनस Q1, 75th परसेंटाइल माइनस 25th परसेंटाइल इज माई IQR, इंटर क्वार्टाइल रेंज. तो तुम देखो, एक डिस्क्राइब कमांड से मुझे अपने न्यूमेरिकल कॉलम की सब कुछ डिटेल मिल गई, राइट? मुझे रेंज मिल गया, मुझे IQR मिल गया, मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन मिल गया. स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर तुम स्क्वायर करोगे तो वेरिएंस आ जाएगा, राइट? तुम्हें मीन मिल गया, तुम्हें मीडियन मिल गया, राइट? और क्या चाहिए? सब सब कुछ तो मिल गया है. मोड वोड नहीं मिल रहा है, दैट इज फाइन, यू कैन कैलकुलेट बाय योरसेल्फ. बट ऑलमोस्ट एवरी इंफॉर्मेशन इज कमिंग इन व्हाट वी हैव डिस्कस्ड. अब तुम यहां देखो, चलो मिल गया, अच्छी बात है, दैट्स फाइन. अब इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे? यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन कम है. तो इससे तुम क्या इंटरप्रेट करोगे? कि जो तुम्हारा टोटल बिल है उसका स्प्रेड थोड़ा ज्यादा है, तुम्हारे टिप का स्प्रेड थोड़ा कम है, राइट? बिकॉज द स्टैंडर्ड डेविएशन इज लेस. एंड दैट मेक सेंस, राइट? दैट मेक सेंस. क्यों? टोटल बिल तो मेरा अच्छा रेंज हो सकता है कि किसी ने चलो $50 का खाना खा लिया, किसी ने सपोज $200 का खाना खा लिया. बट टिप
टिप का रेंज क्या होगा, या तो कोई $5 देगा या कोई $10 देगा। $200 तो कोई नहीं देने वाला टिप। तो तुम्हारी टिप तो एक नैरो रेंज में फंसी रहेगी, जबकि तुम्हारा बिल एक ब्रॉडर रेंज में फंसा रहेगा। तो अगर तुम्हारा बिल एक ब्रॉडर रेंज में फंसा रहेगा, तो तुम्हारा स्टैंडर्ड एविएशन भी ब्रॉडर रेंज में आ जाएगा, और यहाँ का स्टैंडर्ड एविएशन कम हो जाएगा। तुम यहाँ देख लो, मैक्सिमम बिल मेरी 50 है और मिनिमम बिल मेरी $3 है। तो कितना रेंज है? 50.8 माइनस 3.07, अराउंड 51 माइनस 3, 48 का रेंज है। यहाँ पर कितना रेंज है? 10 - 1, 9 का ही रेंज है, राइट। तो ऑटोमेटिकली मेरा स्टैंडर्ड एविएशन यहाँ कम है, यहाँ पे ज्यादा है। दैट आई कैन क्लियरली सी। तो मुझे पता चल गया कि यहाँ का स्प्रेड जो होगा ज्यादा होगा, यहाँ का स्प्रेड जो होगा थोड़ा कम होगा, राइट। एवरेज मिल गया। क्या मेरा एवरेज मीडियन के बराबर है? ऑलमोस्ट। और अगर मेरा एवरेज मीडियन के बराबर है, दैट मीन्स मेरा डेटा कैसा है? कुछ इस टाइप का डिस्ट्रीब्यूटेड है, जहां पे तुम्हारा मीन मीडियन मोड सब पास में ही है। अगर तुम्हारा डेटा ऐसा होता, तो तुम्हारा मीडियन छोटा होता, मीन बड़ा होता। और अगर तुम्हारा डेटा कुछ ऐसा होता, तो तुम्हारा मीन बड़ा होता, मीडियन छोटा, सॉरी, मीडियन बड़ा होता, मीन छोटा होता। यहां पर देख लो थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा तुम्हारा मीन बड़ा है, बट स्टैंडर्ड एविएशन थोड़ा सा छोटा है। इतना फर्क नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा छोटा है। तो अगर मैं टोटल बिल को अगर प्लॉट करता हूं, तो इसका प्लॉट बताऊं कैसा होगा? कुछ ऐसा होना चाहिए, थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए। थोड़ा ही, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही, थोड़ा सा राइट साइड पे टिल्टेड होगा थोड़ा सा। लेट्स गो एंड चेक इट आउट। ये देखो, बोला था कि नहीं, थोड़ा सा टिल्टेड है राइट साइड पे। कैसे पता चला? ये मेरे को नंबर देख के पता चल गया। ये कैसा होगा? ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ये दोनों सेम ही है। तो इसका इसका चार्ट कैसा होगा? इसका चार्ट कुछ ऐसा होगा, नॉर्मल टाइप का, राइट। इसमें ज्यादा सी टेल नहीं होगी। देख लेते हैं। टेल है थोड़ी सी टेल दिख रही है। इतना उसने कैप्चर नहीं किया वैसे, राइट, बिकॉज दीज आर नॉट वेरी ह्यूज आउटलायर्स, राइट। तो टेल थोड़ी सी दिख रही है मेरे को, राइट, टेल इज देयर। बट इतना उसने कैप्चर नहीं किया, शायद से 2.99 है, 2.9 है। थोड़ा सा कैप्चर किया है वैसे, तो ये 2 ऑलमोस्ट 3 है, ये 2.9 है, राइट। थोड़ा सा कैप्चर किया है इसने। ओके। तो एग्जैक्टली नॉर्मल नहीं है, बट थोड़ा सा टेल इसमें भी है, बिकॉज ऑफ दैट योर मीन इज थोड़ा सा हायर। ओके। इसमें भी वैसे ही दिख रहा है, मीन थोड़ा ज्यादा है और तुम्हारा मीडियन थोड़ा कम है। तो ये भी कुछ ऐसा ही दिखाएगा। साइज देख लेते हैं। ये भी कुछ ऐसा ही दिखा रहा है, हाँ, टेल है यहाँ पे। Are you guys understanding this? By seeing this number, you can clearly understand how the data is, right? How the pattern is. तो मुझे उससे एक आइडिया मिल जाएगा कि डेटा कैसा है। सपोज फॉर एग्जांपल कि मैं अपने एम्प्लॉय की सैलरीज एनालाइज कर रहा हूँ। मुझे पता चला कि मेरा मीन थोड़ा सा ज्यादा है, मीडियन थोड़ा सा कम है। तो उससे मुझे क्या पता चलेगा? कि मेरी कंपनीज में कुछ कुछ एम्प्लॉयज हैं जो कि थोड़ी सी हायर सैलरीज पे हैं, राइट। नॉट वेरी मच, बट हाँ थोड़ी सी हायर सैलरी पे हैं। थोड़े एम्प्लॉयज हायर सैलरी पे हैं। सपोज उल्टा लेते हैं, मैंने डेटा देखा, डिस्क्राइब चलाया, मुझे मीन थोड़ा छोटा मिल रहा है, मीडियन थोड़ा बड़ा मिल रहा है। तो उससे ये पता चलेगा कि कुछ कुछ एम्प्लॉयज हैं जो कि लोअर सैलरी पे हैं, आउटलायर्स। और उस लोअर के चक्कर में मेरा मीन भी थोड़ा छोटा हो गया। अगर मेरा मीन मीडियन दोनों साथ में है, मतलब कि मेरा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ना कोई ज्यादा सैलरी पे आउटलायर है, ना कोई कम सैलरी पे आउटलायर है, राइट। तो मुझे अपना पूरा डेटा का अंडरस्टैंडिंग एक झटके में इससे मिल जाता है। Okay. So that's why these numbers are important to help you understand about your data.
तुम जस्ट ए नंबर देखोगे समझ जाओगे क्या चल रहा है। ओके, आई होप दिस मेक सेंस। एनी डाउट्स हियर, लेट मी नो। आज के लिए इतना ही करते हैं, राइट? विल स्टॉप हियर। So we discussed about the entire measure of central tendency. We discussed about entire measure of spread. तो हमारा एक बेसिक एज अ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक स्टैंड पॉइंट वी आर डन। अब हम लोग अगले सेशन में क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा सा और अलग कॉन्सेप्ट सीखेंगे इन द स्टैटिस्टिक्स, दैट इज योर कोरिलेशन एंड ऑल। थोड़ा सा हम लोग प्रोबेबिलिटी भी टच करेंगे, बिकॉज प्रोबेबिलिटीज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ओके, सो बट दिस इज लाइक बेसिक मैथ्स, वेरी बेसिक स्टैटिस्टिक्स। इतना तो शायद तुमको पता पहले से ही होगा, बट इट्स लाइक a quick revision which we did. Okay. So yeah, that is what I wanted to cover. We'll connect again on one of the weekdays and we'll start with some more concepts. So have a nice day. Have a nice rest of the weekend. We'll see you on the next class.